કરી આરોપી તથા બાળકિશોરને ગણતરીના કલાકોમાં પકડી પાડતી વરાછા પોલીસ। સુરત શહેરના વરાછા વિસ્તારમાં શુક્રવારે રાત્રે સામાન્ય બાઇક યુટર્નના મુદ્દે થયેલી તકરારના પગલે એક હૃદયદ્રાવક ઘટના સર્જાઈ હતી। યાત્રા સમાપ્ત કરીને ભાઈને મળવા આવેલા એક વૃદ્ધને માત્ર થોડોક વિવાદ થયાના કારણે બે સગીર બાળકોએ પીછો કરીને ચાકુથી હુમલો કરી મોતને ઘાટ ઉતારી દીધા હતા। આરોપી સગીરો પૈકી એકના પિતા એમ્બ્રોઇડરી કારખાના ધરાવે છે અને બીજાના પિતા હીરા બજારમાં કામ કરે છે। પોલીસે બંનેની ઝડપથી અટકાયત કરી છે અને હત્યાનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। कल वराछा पुलिस स्टेशन के विस्तार में जूनी लावेश्वर चौकी के आसपास एक मर्डर की घटना बनी है, जिसमें एक 60-65 ईयर ओल्ड मेल की हत्या हुई है। घटना की वारदात ऐसी है कि जानकी ज्वेलर्स के पास दो बाइक वाले जो एक बाइक पे सवार थे, जो दोनों उनकी बहस हुई एक इस ओल्ड एज पर्सन के साथ, और उस बहस के बाद उसके जानकी ज्वेलर्स के 100 मीटर के आगे इस दोनों जुवेनाइल ने चाकू मार के बाइक पे ही चाकू मार दिया उस अंकल को, और उसके बाद इनको हॉस्पिटल में ले जाया गया और उनकी सारवार के दौरान इनकी डेथ हो गई। वाराछा पुलिस स्टेशन ने तुरंत एक्शन लिया और दोनों जुवेनाइल को हमने पकड़ लिया है और उस पर हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं 302 आईपीसी के तहत। प्राथमिक जानकारी के अनुसार ये पता चला है कि यहाँ पे जानकी ज्वेलर्स के पास कुछ टर्न लेते समय, ओवरटेक करते समय कुछ बहस हुई थी, और इस बहस के खुन्नस में आके इन दोनों जुवेनाइल्स ने चाकू मार दिया इस वृद्ध आदमी के ऊपर।